Good evening, everyone in India. This is Lauris on our weekly webinar for India. गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य यहाँ पे और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं आज के वीकली वेबिनार में। Today we have one really special guest speaker who has been with NHT basically from day one and helped mentored many leaders and helped them also to achieve their dreams and goals. Joy Garcia, sir. So आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है एक बहुत स्पेशल गेस्ट और लीडर को वेलकम करने के लिए जो एनएसटी ग्लोबल में बेसिकली डे 1 से हैं और जिन्होंने बहुत सारे लीडर्स की जिंदगी बदली है। So he has taken off his from his busy schedule to spend time with us, and as you know, India is just launching now, so therefore, of course, he can help us with his experience in all the other markets. So उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से इंडिया के लिए टाइम निकाला है so that हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया लॉन्चिंग हो रही है और हम लोग किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं ये चीज को सिखाने के लिए आज वो हमारे बीच में मौजूद है। So it's our pleasure to have you here, Mr. Garcia, and of course, it's a great opportunity for us to learn and from the best in the industry. फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक अच्छा मौका है जगरसिया सर के साथ होने का और इंडस्ट्री के जो लेजेंड हैं उनसे सीखने का हमारे पास ये मौका है। Hello everyone. Hello to my friends in India. हेलो एवरीवन, हेलो मेरे सभी दोस्तों को इंडिया में। Thank you, Loris and Adita, for inviting me here for this very special call, and I'm truly excited about the launch here in India. So मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ लॉरिस सर का और मेरा कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इंडिया के लॉन्च को लेके। Yes, it's a great pleasure for us as well, and for let's say past weeks I started to collect some questions from our leaders and prospects in India, and we wanted to address some of them during this webinar. So ये सारा सौभाग्य हमारा है और पिछले हफ्ते से हम लोग अपने लीडर से बात कर रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस हमने इकट्ठा किए थे जो हमारे लीडर्स के थे जो हमें फील्ड से हमें मिले थे। And especially taking in mind that you have basically launched all the 46 already countries and you have vast experience in new markets, so you are the best person for us to learn from. और ये चीज जानते हुए कि आपने सारे 46 मार्केट्स ओपन किए हैं तो हमें पता है कि आप बेस्ट सोर्स हैं सीखने के लिए। And many of our leaders are looking forward to this webinar just to learn how to start business or do business in new markets. और जैसा कि बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस कॉल पे हैं जो इस चीज को जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि किस तरीके से नए मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और बिल्ड किया जाता है। So as many prospects already know, we just have started, and that's why my question would be how to start the business, and because we're still having few products in the market, people don't know yet, so this is a little bit challenge on their side. So basically, if you put that way, if you had to start the business from scratch again, what would be the strategy and what you would do first to start the business in India? So जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं और अभी कोई भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है तो हम लोग बेसिकली बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखूं कि आज अगर आपको इस परिस्थिति में रखा जाए जहां पे आपके पास कुछ भी ना हो और आज आपका डे 1 हो और आपके पास ये सिचुएशन हो तो बिजनेस को आप किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, कौन सी चीज आप पहले करोगे? Loris, this is actually probably going to be my favorite question. Loris, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। And it's real important, so I'm going to answer this in a couple of ways. So ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मैं कई तरीके से आपको आंसर देने वाला हूँ। And
weave in some of my story and how I've gotten to where I am today here in NHT Global. मैंने बहुत जगह पे अपनी स्टोरी शेयर की है कि मैं एनएसटी ग्लोबल में आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं वहां पे कैसे पहुंचा. The foundation of your business, the foundation of your family, the foundation of your success in your business will always be based on one true fact. सो आपका बिजनेस का फाउंडेशन, आपके फैमिली का फाउंडेशन, आपकी सारी चीजों का जो फाउंडेशन है वो एक सत्यापित फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. So before I got started with NHT, एनएसटी काम स्टार्ट होने से पहले I knew exactly what I wanted in life. I had a dream. मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए. मुझे अपना ड्रीम पता था, एग्जैक्ट ड्रीम पता था. That dream was so specific that I could taste it, I could eat it. I dreamt it every single day. मेरा जो सपना था वो इतना हकीकत जैसा था कि मैं उसको महसूस कर सकता था, मैं उसको सूंघ सकता था, मैं उसको महसूस कर सकता था. ये इतना मेरा सपना स्ट्रांग था और मैं उसको रात और दिन मैं उसके ऊपर सोचता रहता था. I fallen in love with my dream. मुझे अपने सपने से प्यार हो गया था. And that provided me the foundation and the foundation of my life and my success in business. इसी चीज ने मेरी नींव रखी मेरे जीवन की सफलता की और मेरे इस बिजनेस की. I'll tell you why this is important, the foundation. मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये क्यों जरूरी है. So I live in Canada, and Canada is part of the North American continent. मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन जो महाद्वीप है उसका हिस्सा है. So on the same side of the planet, we have Latin America. So Mexico all the way down to the tip of Argentina. So जिस भाग में मैं रहता हूँ, जिस महाद्वीप में मैं रहता हूँ, कनाडा के अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी रहते हैं, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना और ये सारे कंट्रीज भी रहते हैं. So we're on the same side of the planet. We have basically the same resources, and we are founded by the same people, Western Europeans. So हम लोग दुनिया के एक ही हिस्से में रहते हैं. हम लोगों के जो कंट्री के फाउंडर्स हैं वो भी एक हैं और सभी लोगों के जो वेस्टर्न यूरोपियन लोग हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी सेम है. But when you look at Canada, United States, it's not logical, Adita. It's not logical that Canada, United States has enjoyed huge abundance and prosperity, whereas in Latin America, that's not the case. और ये लॉजिकल सी बात है जो आप देख सकते हो कि अमेरिका और कनाडा इतने अमीर हैं, इतनी उनके पास दौलत है, जबकि लैटिन अमेरिका यानी अर्जेंटीना, मैक्सिको और ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ ऐसा केस नहीं है. And it's not logical because we're founded by the same people, the Western Europeans, around the same time, the same side of the planet, say similar resources, but there's a difference, a major difference in how we live. लेकिन ये लॉजिकली अगर आप देखें तो ये चीज हजम नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सेम वेस्टर्न यूरोपियन लोगों ने ही हमारे ये सारी कंट्रीज को बसाया है, सेम हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सेम टाइम पे बसाया गया है, लेकिन फिर भी हमारी जो लाइफ है वो इतनी डिफरेंट है. And it goes back to when both markets were settled. So when the English and a little bit of Spanish and the French came to what we call Canada, the United States today, they came looking for a home. Whereas when the Spanish and the Portuguese and a little bit of the English, when they went down to Latin America, they went looking for wealth. So they would kill the local people, take the money, take the gold and silver or whatever they could get and sent it back home. So जब फ्रेंच और स्पेनिश लोग कनाडा में और अमेरिका में आए तो वहां पे वो एक घर ढूंढते हुए आए, एक नया घर. और जहाँ पे अगर स्पेनिश लोग थे, पोर्चुगीज लोग थे और ब्रिटिश लोग थे, ये लोग जब अर्जेंटीना में और इन सब कंट्रीज में गए तो ये वहां पे लूटने के मकसद से गए. वहां के लोकल लोगों का उन्होंने मर्डर किया, वहां से गोल्ड लूटा, वहां से पैसा लूटा.
और उस पैसे को अपने घर भेजा, वहां के गरीब लोगों को उन्होंने वहां पे लूटने का मेन काम किया। So, because the foundation was set many generations ago, you see the results today of the foundation. When you're looking for a home, you're working with the universal principles. But if you're just looking for wealth and doing whatever you could take for wealth, the consequences are set. And you see generations later where Latin America is still trying to catch up. So, अगर आप आपका जो फाउंडेशन है, अगर आपने नींव रखी है कि आप एक घर बना रहे हो, तो आपके जो सिद्धांत होते हैं, जो आपके मौलिक आदर्श होते हैं, वो अलग होते हैं। और अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप आए हो, तो आपके फाउंडेशन अलग होते हैं। और आज आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। आज कहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो आज भी अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कंट्रीज इतने आगे बढ़ चुके हैं। So I really believe that the reason why we've been successful in NHT Global is because when I got started, my business partner Dan is founding back in the first day that NHT launched. We had the right foundation. We fell in love with our why. We made a commitment that we would never quit or think of quitting. The foundation was set. So जब डे वन था एनएसटी ग्लोबल का, तो मैं और मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं डैन कैटो सर, सो हम लोगों का वाई बहुत क्लियर था, हमारा ड्रीम बहुत क्लियर था, और हमने ये चीज डिसीजन ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए हमें क्विट नहीं करना है। When the foundation, so that foundation, you see the results 18 years later. You know, we're just launched into India. So that India now, I believe, is our 48th country we've officially opened up. Well over 2 billion in sales. Fastest growing publicly traded company 2 years in a row. You see the results that we've had is because it goes back to the foundation of our why. So आप देख सकते हैं जो हमने अपने घर के जैसा फाउंडेशन रखा बिजनेस में, इसकी वजह से 18 साल बाद आज क्या नतीजा मिला है। आज हम दुनिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी 2 साल इन रो रिकॉग्नाइज हुए। 48th नंबर पे इंडिया है जो अभी ओपन हुआ है, और अभी जो हम ये ग्लोबल लेवल पे हम जो सक्सेस अचीव कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि हमारा जो वाई था और जो हमारा फाउंडेशन था वो ये था। So Dita, what does, so that foundation comes to your why. So when I got started, before I got started in NHT, I knew what my purpose in life was. I knew my dream. I fell in love with that dream. And what happened is I tapped into the universal principle, and it's a universal law. What we think about, what we fall in love with, will come about in our life. What we focus on will come about in our life. So मुझे मेरा ड्रीम पहले दिन से क्लियर था, मुझे अपना विजन पहले दिन से क्लियर था, पहले मिनट से मुझे उस चीज का पता था। और ये सच है कि आप जिसके बारे में रात दिन सोचते रहते हो, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा प्यार है, वो चीज आपकी लाइफ में होती ही होती है। So now coming to your question, Loris. Yeah. So when I had that why, the next step was I created an action plan. I realized the huge opportunity that I had in front of me. I realized that if I went to work, I could change the legacy of my family. I could change many other families' lives around the world. So आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब मुझे ये चीज क्लियर हुआ, तब मैंने एक एक्शन प्लान बनाया, और उस एक्शन प्लान के हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था इससे मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, अपनी फैमिली की जिंदगी बदल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकता हूँ, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं एक फाउंडेशन बिल्ड करके जा सकता हूँ, एक लेगेसी बना के जा सकता हूँ। So that action plan and understanding where I was in the world and what it would do for my family. And I need to help you understand the vision of what you have in your hands with NHT Global in India. Pardon, can you repeat it? It's helping understand our India distributors, the type of opportunity they have right now with NHT Global. So मैं आपको मदद कर रहा हूँ कि एनएचटी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि इंडिया में आपके पास किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज आपके हाथ में है, और किस तरीके से ये आपकी लाइफ बदल सकती है।
So if you look at most of our pioneer and distributors around the globe, many of them have become million-dollar earners. Many of them have become global ambassadors. बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने कंपनी के साथ स्टार्टिंग से जोड़ के काम किया, वो लोग आज की डेट में करोड़पति हो चुके हैं. Because they understood the timing. क्योंकि उनको टाइमिंग का पता था. So in the next year, no one will be able to say, I was there at the beginning of India. I was there in the first 90 days. A year or 2 years from now, you won't be able to say that. It's only the people that are involved right now that see the vision and are willing to go to work. So आज से 1 साल बाद आप नहीं बोल पाओगे कि मैं कंपनी के स्टार्टिंग के 90 डेज में था. So अभी जो लोग हैं वही लोग ये बोल सकते हैं और वही लोग ये बता सकते हैं कि वो काम पे किस तरीके से गए. Okay, so going back to the next step was my action plan. So I had the vision, and Aditya was very difficult back then. The company stock was 1 penny. We had no story. The company had no money in the bank, like NHT has today, $150 million. So we only talked about the future. But here and today in India, we can talk about the past. The amount of countries that we've opened up. NHT story is one of the best out there. So जब हमने काम स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किल थी क्योंकि उस टाइम कंपनी के शेयर की कोई वैल्यू नहीं थी और कुछ पैसे में कंपनी के शेयर की कीमत थी और हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, कुछ ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था. तो हम उस टाइम पे सिर्फ फ्यूचर की बात करते थे कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. और आज लेकिन हम अपने पास्ट की भी बात कर सकते हैं जब हमने इंडिया ओपन किया है. Okay, so let me give you all a business plan that you can take today and do that over the next year. And I promise you, it's one of the things I can probably promise you because of the activity, that you will create huge results from this activity. So मैं अभी आपको एक प्लान ऑफ एक्शन देने वाला हूं. अगर आप इसको करते हो तो आपको ह्यूज रिजल्ट मिलेगा आपको आने वाले 1 साल के अंदर. Okay, so what I did is from day one, when we opened the doors in NHT, is my goal was to connect to 3 new people a day. So मेरा जो पहला वो था गोल था कि 3 लोगों से रोज मुझे बात करना है. 3 new contacts a day, so to share the product and share the business. So मेरा 3 लोगों से शेयर द प्रोडक्ट्स और शेयर द बिजनेस का कॉन्सेप्ट था. So out of those 3 new contacts a day, my goal for that week, for the week, was to get 5 business presentations, to show 5 business presentations. मेरा ये गोल था कि वो 3 लोगों से जिनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे हफ्ते की 5 बिजनेस मीटिंग मिले. So what happened, ladies and gentlemen, with all that activity, and I stayed consistent for the year. So by the end of the year, I had shown I had introduced the product and the business to over 900 people. So हुआ क्या, पहले साल के अंत में मैंने रेगुलरली ये काम किया तो मैंने 900 से ज्यादा लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस शेयर किए. We ended up doing $20 million in sales our first year. हमने टोटल 2 करोड़ डॉलर की सेल करने में हम सफल है अपने पहले साल में. Out of those 900 plus people, I sponsored over 100 people into the business. और वो 900 लोगों में से करीब 100 लोगों को मैंने साइन अप किया बिजनेस में. That was the foundation of NHT through that activity. So what happened, Aditya? I got really good at prospecting. I got really good at showing the business. Back then, we didn't have the tools like we have today because it's just the numbers. Because I did the numbers, I got the results. तो उसकी वजह से मैं बहुत पारंगत हो गया, मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया बिजनेस प्रेजेंटेशन देने में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इस तरीके के टूल्स नहीं हुआ करते थे जैसे अभी है YRBiz.com. इस तरीके के टूल्स हमारे पास अब नहीं है, जैसे अब हैं वैसे तब नहीं थे. And very important for all of you to understand that people don't buy into NHT because of the products or the business at first. They buy because of your why. Why are you doing it?
And that's what happened when I got started. Is everyone that I was showing the business to, I was telling them, I'm doing this business because I'm going to build my dream home on the lake here. And people bought into my dream, and I started planting great seeds of this universal principle. What we focus on is what we get in life. सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, लोग एनएसटी ग्लोबल इसलिए नहीं ज्वाइन करेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं या प्लान बहुत अच्छा है। लोग इसलिए ज्वाइन करेंगे कि लोग स्टार्टिंग में आपका वाई देखेंगे, आप अपने वाई को लेके कितना सीरियस हो। जैसे मैं लोगों से ये शेयर किया करता था कि मेरा वाई क्या है, मुझे झील के किनारे अपना एक घर बनाना है। सो ये यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, आप जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज लाइफ में जो है वही चीज आपको सामने मिलेगी। जो भी चीज पे आपका फोकस होगा वही आपके लाइफ में आगे आएगी, वही आपके लाइफ में आएगी। So, Laura, next question. Okay, good. Agla Thank question. you for detailed let's say explanation of this one. And of course, we have received a lot of questions, and I think this will be a good answer to some of them. And of course, we have also some questions like, for example, how to stay motivated, because it's sometimes working with people can be challenging. So what are your routines to stay motivated, and what you would suggest to all our distributors? सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें ऑल टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम लोग फील्ड में लोगों से मिलते रहते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो हम खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? आप खुद को आप कैसे मोटिवेटेड रखते हो? Yeah, so Laura, this comes down to that foundation I was just sharing with everyone. Is if you don't have a dream and it's not specific enough and you don't fall in love with it, it's going to be very difficult to build a long-term business because the disappointments will take you out of the business. So everyone that I get started in the business, I ensure them to do two things. The first thing is identify what they want. सो अगर आपका, ये अगेन मैं आपके फाउंडेशन पे लेके जाऊंगा, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको अपने ड्रीम से प्यार नहीं है, तो बिजनेस में डिसअपॉइंटमेंट को झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए जब कभी भी कोई भी पर्सन मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा मैं उसको बैक टू बेसिक्स लेके जाता हूँ और मैं उनको हेल्प करता हूँ आइडेंटिफाई करने में कि उनको जिंदगी में एक्चुअल में क्या चाहिए। And the second thing is creating a personal development program. और सेकंड थिंग जो मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ कि उनके साथ एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ। Well, from January 23rd, 2001, when NHD launched, every single day for the next 18 years, I've spent at least an hour a day feeding my mind with greatness. 23 जनवरी सन 2001 से एनएसटी ग्लोबल स्टार्ट हुई है और तब से लेके आज तक हर एक दिन मैंने हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने दिमाग के लिए दिया है, दिमाग को अच्छी चीजों से फीड करते हुए। I surrounded myself with people that were positive, that were had great attitudes, that had the prosperity mindset. But the feeding of the mind, Aditya, is critical to staying on track. So मैंने अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों को, मोटिवेटेड लोगों को अपने चारों तरफ घेरा और ऐसे लोगों का जिनका अबंडेंस का माइंडसेट था। सो बिजनेस में टिके रहने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने दिमाग को रोज के बेसिस पे क्या फीड कर रहे हो। Yes. So I implore you. So this is why everyone that gets started in NHT Global, I know Aditya, you're doing the same thing. Is when you're starting someone new into the business, make sure that they get the Science of Getting Rich book. You can get it on my training site, Steam Team, the ebook version, and have them study that book. And that's a great first book to help them understand the laws of the universe and feeding their mind with greatness. सो हर एक पर्सन को जब कभी भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसा कि मैं भी करता हूँ, जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले स्टीम टीम पे रजिस्ट्रेशन कराना और फर्स्ट 90 डेज सेक्शन में जाके आपको वहां पे एक बुक है SOGR साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वो बुक कंपलसरी, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहां पे।
साइट पे, वो हर एक पर्सन को हम देते हैं स्टार्ट करने के लिए। वो सबसे बढ़िया बुक है अपना बिजनेस करियर स्टार्ट करने के लिए। Okay, so this is and Aditya, I'm going to just share a quick study that was done about 7 years ago to help people understand the importance of consistency in this area. और मैं आपसे अभी एक सर्वे शेयर करूंगा जो आज से 7 साल पहले हुआ था कि कंटिन्यूअसली काम करने की इंपॉर्टेंस क्या है, कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों कोई भी चीज निरंतर तरीके से करनी चाहिए। So the North American Space Agency did a study that had what they did is they put these glasses on these astronauts, and these astronauts had to wear these glasses 24 hours a day and never take them off, and these glasses made them look upside down. सो नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनको एक खास तरीके का चश्मा पहनाया गया था 24 घंटे के लिए। उनको ऑल टाइम वो चश्मा पहनना होता था और उस चश्मे को पहनने की वजह से उनको सारी चीजें उल्टी दिखती थी दुनिया की, यानी वो जो भी चीजें वो देख रहे हैं वो सब उनको उल्टा दिखाई देता था और वो उनको 24 घंटे पहनना रहता था वो चश्मा। 26 days later, every single astronaut started seeing right side up with those glasses on. सो 26 दिन के अंदर सभी लोग जो थे वो उल्टा देखने लगे थे उस चश्मे की हेल्प से। They did a second study, different astronauts, but they changed the study by 1 day. Day 16, they had to take the glasses off for 24 hours and then start again 1 day later. सो उन्होंने एक दूसरे सेट ऑफ लोगों के साथ भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस एक छोटा सा बदलाव कर दिया। उन्होंने 16वें दिन जो था वो चश्मा 24 घंटे के लिए हटा दिया और फिर से उनको पहनाया और 27वें दिन फिर वो चश्मे को उन्होंने हटाया। And you know, it took an additional 26 days later for all of them to see right side up again, just missing 1 day. और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन सभी लोगों को फिर से 26 दिन लगा वापस से वो उल्टा तरीके से वो देखने के लिए। So 1 day reset the clock, basically. Missing 1 day reset the clock. सिर्फ एक दिन ने पूरी घड़ी को वापस जीरो पे ला दिया, सिर्फ एक दिन की मिसिंग ने। So this study got me very excited because I recognize, working with tens of thousands, hundreds of thousands of people all over the world, I recognize the ones that could stay focused the longest and be consistent every day in reading the right books, prospecting every day, every day, visualizing their dream every day. And by day 26, 27, 28, this is where magic starts to happen, like it did with the astronauts. The consistent work in these areas make a huge difference in results. So, वो लोग जो 26 दिन के लिए ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे, यानी वो अपना जो गोल सेटिंग है वो उन्हें प्रॉपर वो करेंगे, राइट बुक्स वो पढ़ना शुरू करेंगे जो स्टीम टीम पे अवेलेबल है, और प्रोस्पेक्टिंग डेली के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे, अपने ड्रीम को डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन करेंगे। सो 27th 28th डे पे मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। Magic started to happen. So Loris, I forget what the question was about by now, but I hope that it answered the question. Yeah. So of course it's about motivation. Yes, and staying on track. And these are the two areas that you got to be critical in, or else the weeds would take control. So आपको जो मैंने दो क्षेत्र बताए, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग बुक्स पढ़ना और विजुअलाइजेशन करना, अगर आप ये दोनों चीज कंसिस्टेंटली नहीं करते हो 26 दिन तक के लिए, तो दिमाग में जो है वो गलत तरीके की घास फूस उगने लगेगी। And one of the things that we can do in the future, gentlemen, is I've got this manifestation program, activity program I do every single day, and we could do a training on that, just so people can duplicate, so they can manifest their dreams. और मेरे पास एक प्रोग्राम है कि जो अपना सपना होता है उसको हम रियल लाइफ में कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम साकार कर सकते हैं,
तो वो प्रोग्राम जो है हम लोग आने वाले टाइम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर उसको प्रोग्राम को फॉलो करे और अपने सपने को आसानी से साकार कर पाए उसके स्टेप्स को फॉलो करके। And one last thing, I'm going to share just a story, Adita. When I first got started in this business, this is back 1993. I was in my early 20s, and I had a very famous business partner, upline, who called me, said, "Hey kid, you're doing so well. I'd like to come in and do a boot camp training." And this guy was the #1 sales trainer in the world in corporate sales. So मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। 1993 में मैं एक मिडिल 20 एज का मैं पर्सन था और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। तो मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए आके एक बूट कैंप करूंगा, यानी एक मैं मीटिंग करूंगा और उसमें जो है आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। I couldn't believe it. I got so excited, and all he wanted me to do is to sell the tickets in my hometown here. So I worked for 3 months, Adita, and I filled the room. I had 2,000 people show up. So मैं उस चीज को लेकर बहुत सुपर एक्साइटेड था। मैंने रात दिन जो है मेहनत की, मैंने सारे टिकट्स जो है वो सेल ऑफ कर दिए और उस रूम में 2000 लोग आए थे। And I remember like this was yesterday. Is that whole weekend I thought I'm going to be a millionaire after this. This is incredible. All these people showed up. They're going to use these sales skills and these tools that this superstar trainer is doing. I'm going to be a multimillionaire. So मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता है कल की बात है। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये जो 2000 लोग आए, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इन्होंने इतनी बढ़िया सेल्स की ट्रेनिंग दी है, ये सारी सेल्स की पूरी पिक्चर्स हुई हैं, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता करोड़पति होने से। So everyone leaves excited on the Sunday night. This guy did his best. It was the best training weekend up until that time that I ever attended. And I'm counting the dollars. I'm thinking I'm going to be a millionaire. It's going to happen overnight. No problem. So वो मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं सुपर एक्साइटेड था कि अब तो सिर्फ केवल डॉलर गिनना है और मैं उसको लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। So about 3 weeks comes by and the group doesn't grow very much, and I'm really concerned. I couldn't understand it. You know, we had this 2,000 people show up. They were very excited, but nobody's doing much. And so I called this gentleman up, and he says, "Okay, kid, I planted good seeds. Sometimes the seeds sprout 90 days later." So 3 हफ्ते बाद मैंने ये देखा कि मैं 2000 लोगों को लाया, लेकिन कोई भी कुछ ऐसा खास कर नहीं रहा था और कुछ भी ऐसा बिजनेस में कुछ खास हो नहीं रहा था मेरे नीचे। मैं थोड़ा टेंशन में आया, तो मैंने उस जेंटलमैन को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कई बार 90 दिन का भी टाइम लगता है। मैंने बीज बो दिया है दिमाग में, तो कई बार 90 दिन का टाइम लगता है। So what ended up happening is after about 90 days, the business didn't grow much. I couldn't understand it until I realized the secret to building an organization. 90 दिन बीत गए और बिजनेस कुछ खास बढ़ा नहीं, तो मैं सरप्राइज था, लेकिन मुझे एक चीज सीक्रेट पता चली ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने की। In network marketing, the organization that we have is a volunteer army. नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है वो एक खुद की मर्जी स्वयं सेवी आर्मी है। So that weekend, these 2,000 people had all the tools for success for them. But when they went home on Monday and Sunday night, and when they went back home to their city, they voluntarily decided not to use the success tools, not to use all the training, because their self-esteem did not allow it. ये जो 2000 लोग थे जो उस मीटिंग में आए थे और उस मीटिंग को अटेंड किया था, उनके पास सारे सेल्स के ट्रिक्स थे, सारे टूल्स थे, लेकिन उन्होंने रविवार की शाम को उन्होंने मीटिंग अटेंड करके घर गए और सोमवार को उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है ये जो टूल सीखा है उन्होंने, ये जो सारे टेक्निक सीखे हैं, ये उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो सेल्फ इमेज है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था।
So that is when, from then on, I started understanding if I could raise the self-esteem of people, raise their conscious level by showing them how to develop their dream, how to fall in love with their dream, how to feed their mind every day. When I raise their conscious level, then people will end up having the self-esteem to do more business. And that was what happened. And that's been the secret to success, our success in NHT. All over the world, all our leaders have bought into this philosophy, and you see the results of it. और हमारी सक्सेस का यही सीक्रेट है कि उसके बाद से मैंने सिर्फ एक चीज पे काम करना शुरू किया, लोगों की सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना, लोगों को उनके ड्रीम्स से कैसे वो फॉल इन लव हो सकते हैं वो हमें उनको सिखाना। और जब वो एक बार ड्रीम्स के वो अपने प्यार में पड़ गए और जब उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज उनकी इम्प्रूव हुई, वो ऑटोमेटिकली वो काम पे लग गए। और यही हमारे दुनिया भर के जितने हर मार्केट के कोर लीडर्स हैं, उन्होंने यही चीज फॉलो की है और इसी की वजह से बिजनेस में ग्रोथ हुआ है। और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं आज 18 साल बाद। So most people, especially in today's world, Aditya, know what to do, but most people don't do what they know, and that's because of this area that we've been talking about. So basically क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को ये पता है आजकल की दुनिया में ना कि उनको क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन वो ये चीज इसलिए नहीं करते, लेकिन वो चीज वो करते नहीं है जो उनको पता है कि ये करना चाहिए। सो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल उतना ग्रो नहीं हुआ रहता है। Okay, next question, Loris. Okay, good. So thanks for that. Yes, so I don't know. I think we should move also a bit to some practical questions, because of course we understand that mindset is very important, and we have actually quite good trainings on that on steamteam.ca. So where everyone should be basically going and checking the videos about products, business, mindset, personal development. We have also in Hindi, so this is very important. But I receive also a lot of questions regarding binary. So binary plan, what to do and what not to do, because binary is super powerful, but if you misuse this one, you can really damage the or destroy your team. So maybe you can share some do's and don'ts on that. Yeah, so अभी हमने जो माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग देखी, इसका डिटेल वर्जन इस टीम पे अवेलेबल है, जहां पे हर किसी को जाना चाहिए और डेली के बेसिस पे सीखना चाहिए। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बाइनरी के ऊपर लेके, कि बाइनरी जो कि बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है, और तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो चीजें हमने गलत की तो ये हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? This is actually, Loris, you are right. The binary program, the binary compensation plan is the most powerful comp plan in the industry. आप सही बोल रहे हो लॉरिस कि जो बाइनरी प्लान है वो इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल प्लान है। But it's also the worst compensation plan if you use it incorrectly. और ये सबसे घटिया भी पे प्लान है अगर आपने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो। Because Aditya and Loris, it lends itself to behavior. The binary plan lends itself to behavior that destroys organizations. So कई बार लोग जो है वो एक गलत बिहेवियर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाते हैं। Okay. For most of you to understand is when NHT put together this cycle binary, I believe in 2001, actually before the company was launched, we developed it in 2000, but it was very innovative. I don't know, I can't think of another company at that time that had a cycle binary, but it was very new. So सन 2000 में जब हमने बैठ के इसका प्लान डिसाइड किया था, फाइनलाइज किया था, तो उस टाइम पे साइकिल बाइनरी हमने लाई थी, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता है कि कोई और कंपनी ऐसी रही होगी जिसके पास ये साइकिल बाइनरी वाला मॉडल था। So as most of you understand that have been involved in the industry before, majority of the companies that have launched in the last 18 years have gone with the cycle binary. और ज्यादातर लोग जो आप लोग इस इंडस्ट्री में जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता होगा
कि ज्यादातर कंपनीज जो आई हैं वो साइकिल बाइनरी का उन्होंने यूज किया है. Okay. So if you look at NHT Global, if you look at last year and the year before, NHT has the highest documented payout in the industry. So last year, they paid out 46% of commissions. सो अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो जितनी भी आप कंपनीज देखते हैं उसमें हाईएस्ट डॉक्यूमेंटेड पे आउट एनएसटी ग्लोबल का है. लास्ट ईयर 46% कंपनी ने रेवेन्यू का बांटा है, जो किसी भी और कंपनी का मुकाबले बहुत ज्यादा है. So Aditya, as you know, there are a lot of people out there that are involved in privately held companies, and they're telling people, or even sometimes the company promotes this, so that they pay out 50% or they pay out 60%, but they can never prove it because no one sees their accounting. And of course, in NHT, you can see your accountant because of the publicly traded status. So bottom line, majority of companies in the industry, to stay profitable, to stay in business, the newer companies are paying in the 40, 41, 42, and the older companies are still in the 30 percentiles. सो बहुत सारी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्लेम करती हुई मिलेंगी कि हम 50% पे आउट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का. क्योंकि कोई भी कंपनी को प्रॉफिट में रहने के लिए, बिजनेस में रहने के लिए, वो जो नई नई कंपनियां आ रही हैं वो 40% के आसपास पे आउट करती हैं, और जो अभी भी पुरानी कंपनियां हैं ना वो 30% के आसपास का ही पे आउट कर रही हैं. So for those of you who understand compensation plans, if you look in the binary comp plans out there, majority of companies, as you know, NHT is paying 20% on the weak leg. सो ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि एनएसटी ग्लोबल जो है वो साइकिल बाइनरी में 20% तक पे करती है. We're the only company in the industry that I'm aware of that is paying 20% on the weak leg. For new distributors, for global ambassadors, for people like myself that's been here for 18 years, we all get paid the same. सो कंपनी जो है वो 20% सबको पे करती है, चाहे आप नए पर्सन हो, चाहे पुराने पर्सन हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, वो 20% तक का बाइनरी का पे आउट उठा सकता है. But you see, most other companies are paying 10% or a little less than 10% on the weak leg. ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो बाइनरी का 10% या उससे कम का पे करती हैं बाइनरी में. And they take the other 10% that NHT is paying and they put it into other bonuses. और वो जो 10% एक्स्ट्रा है, एनएसटी ग्लोबल 20% पे कर रही है, उसका जो 10% है वो बाकी बोनसेस में उसको बांटने की कोशिश करते हैं. Those bonuses look actually impressive when you put it on paper. वो बोनसेस जो है बहुत इंप्रेसिव लगते हैं जब आप उसको पेपर पे रखते हो. But the challenge is 99% of the distributors never qualify for those bonuses, so the company takes the breakage and instead of paying it out. सो एक्चुअल में पेपर पे तो देखने पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 99% डिस्ट्रीब्यूटर उस पैसे को कभी बनाते ही नहीं है, तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है, और वो जो बचा हुआ पैसा होता है वो कंपनी अपने पास रखती है. And as you know, NHT pays always the 20% on the weak leg. और जैसा कि आप जानते हैं एनएसटी ग्लोबल में कोई भी हो उसको 20% का पे आउट मिल जाता है, जो भी इस आईडी से स्टार्ट करता है. So now let's talk about philosophy. आइए अब फिलोसफी के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए हमें. And please understand, ladies and gentlemen, and I don't want to sound arrogant, but the key to success in life and in business is find someone who has the results that you want and duplicate their philosophy and actions. मैं एरोगेंट नहीं साउंड करना चाहता हूँ मैं, लेकिन आपको वो शेयर कर रहा हूँ. जिंदगी में अगर सफल होना है तो जो आदमी ऑलरेडी सफल हुआ है उसके प्रिंसिपल्स को कॉपी करें और उसको ही अडॉप्ट करें, उससे हमारी सक्सेस गारंटीड मिलती है. So my philosophy in building is long term. This is why for 18 years I've earned, 7-figure residual income. This is why whether I work or not, I get paid over and over and over again. And it's because of the philosophy that I have in building. सो अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम उठाना है तो आपको जो मेरी फिलॉसफी है, जिसमें मैं 7 फिगर्स में मैं हर महीने कमाता हूँ, अर्निंग से मेरे जो चेक्स हैं
उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ मैं एक बार नहीं कमा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली कमा रहा हूँ। So I've shared much of my philosophy here in today's webinar. मैं अपनी फिलॉसफी आपको ज्यादा करके मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आज इस वेबिनार में। But we also know a lot of people, a lot of talented people, a lot of talented leaders or so-called leaders in the industry that have been involved in 3, 4, 5, 6 companies in 5 years and 10 years. They're consistently changing because it comes down to their philosophy. और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में ही 3, 4, 5, 6 कंपनियां बदल डाली हैं। तो Okay. इसके पीछे कारण कहाँ आता है? ये सब चीज बॉइल डाउन होता है आपके फिलॉसफी पे। So the power behind a binary comp plan is because you only have to build 2 legs. सो सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट क्या है बाइनरी प्लान का? कि सिर्फ यहाँ पे आपको 2 ही टीम बिल्ड करनी है बड़ी इनकम उठाने के लिए। 2 legs. All the other comp plans in the industry, the unilevel, the breakaway, even the matrix, which only one company ever has made that work, they all have it where you have to build wide to make money. सो बाकी कोई भी आप प्लान ले लो, चाहे यूनि लेवल प्लान ले लो, चाहे ब्रेकअवे प्लान ले लो, इवन मैट्रिक्स प्लान भी ले लो, उसमें आपको ज्यादा लेग्स यानी आपको पूरे चौड़ाई में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा इनकम उठाने के लिए बड़ी। So the first rule in the binary plan is never promise anyone that is joining your team that you're going to build 1 leg for them. सो सबसे पहला उसूल ये है, जब भी कोई आपके साथ एनएसटी ग्लोबल में जुड़ता है, कभी उसको कमिटमेंट ना करें कि आप उसका 1 लेग बिल्ड करके देंगे। So that creates weakness. वो एक कमजोरी पैदा करता है। That also creates, you're also sharing promises to people that sometimes you cannot fulfill. और आप कई बार ऐसे प्रोमिसेस शेयर कर रहे होते हो जो आप कई बार पूरे नहीं भी कर पाते हो। One of the rules that I have in leadership is always follow through with your promises, because once trust is gone, you don't have an organization. After that, your organization will implode. सो एक जो मैं बेसिक्स में हमेशा लीडरशिप में सिखाता हूँ कि जब कभी भी आप कोई प्रॉमिस करो, जब कभी आप कोई कमिटमेंट करो, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको जरूर पूरा करो, क्योंकि एक बार अगर भरोसा टूट गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। Your organization is only as strong as the weakest link. So you need to implore everyone in your team, always treat spillage as a blessing, but don't expect it. आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना ही मजबूत है जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे कमजोर बंदा है वही जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती को दर्शाता है। तो जब कभी भी आप लोगों को रिक्रूट करते हो, आपको उनको बताना है कि आपको 2 टीम्स बिल्ड करनी है और आपको जो स्पिल ओवर मिल रहा है वो एक बोनस है, तो उसको एज अ बोनस ट्रीट किया जाए, ना कि आपका कोई हक है। So I've seen many leaders in the industry, they build this way to create short-term momentum, and their organizations always fall apart because eventually they cannot fulfill their promises. And you're setting up expectations that are not properly met. But ultimately that philosophy, the power leg principle, will never work long term. And that's the negative part of binary, is when it lends itself to this type of behavior. But if you're teaching everyone in your team, you got to build 2 legs and to treat spillover as a blessing if it happens, everyone building 2 legs, because Aditya, bottom line, in all other comp plans, it doesn't happen, or very rarely. And if you only build 1 leg in any other comp plan, you will not make money. The advantage and if you only build 2 legs in another comp plan, you make very minimal money. The advantage here, you build 2 legs and you can become a global ambassador. सो आपको यहाँ पे कुछ एक चीजें ध्यान देनी है। आप एनएसटी ग्लोबल में आपको 2 टीम का बिजनेस बिल्डिंग हर एक को सिखाना है और उनको ये बताना है कि अगर कोई भी जो स्पिल ओवर आता है, कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा आता है, वो एक ब्लेसिंग है, वो एक आशीर्वाद है। आता है नहीं आता है, फिर भी आपको टीम 2 बिल्ड करनी है, क्योंकि अगर बाकी आप कोई भी प्लान ले लीजिए, चाहे यूनि लेवल हो या कोई भी प्लान हो, वहां पे अगर आपसे 1 टीम बिल्ड करते हो तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं आता है। 2 टीम आप बिल्ड करते हो तो आपको बहुत थोड़ा सा कमीशन आता है। तो वहां पे आपको बहुत सारी टीम्स बिल्ड करनी पड़ती है बड़ा कमीशन उठाने के लिए,
बल्कि NHT ग्लोबल में सिर्फ आप 2 टीम बिल्ड करके आप ग्लोबल एम्बेसडर बन सकते हो. And I know a lot of you are probably have, some thoughts about this. I know a lot of you, it's not what you've been taught. I know a lot of you have seen, have been in the industry for a while and, would prefer just to build one leg or have things given to you, which doesn't happen here in NHT. But ultimately, believe me, 100%, if you follow my advice, you will be thanking me. I've got 18 years of incredible success all over the globe, and this is a philosophy that is critical to building long term. और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले बाइनरी में काम किया होगा, उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये कैसे काम करेगा, मैंने तो ऐसे पहले काम नहीं किया, क्योंकि शायद आपको इससे पहले यही ट्रेनिंग मिली हो कि एक ही लेग आपको खड़ा करना है. लेकिन मैं आपको 18 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि आपको जो है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप मुझे लाइफ टाइम आप थैंक यू बोलेंगे. और बहुत मैं एक पॉइंट मिस कर रहा था पहले, उसका भी मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं. अगर आप एक लेग कल्चर प्रमोट करते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आप एक मोमेंटम जनरेट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ये बिखरने वाला है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाते हो, और टीम जो होती है जब उसके प्रोमिसेस पूरे नहीं होते तो वो बिखर जाते हैं. तो आप अगर ये फिलोसफी आप अडॉप्ट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में आप हमेशा थैंक्स बोलोगे. Okay, the second philosophy in the comp plan, Aditya, is the majority of, when you look at the NHD comp plan, let me put it this way, Aditya, when we're on a plane and we're traveling with a child and there's an issue with the plane and the oxygen mask comes out, they tell us that we got to put on the oxygen mask ourselves first and then put on the child, because if we don't help ourselves first, then the child's not going to be helped out. और एक और फिलॉसफी मैं आपको शेयर करूंगा. जब कभी भी आप प्लेन से यात्रा करते हैं तो प्लेन में सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं, किसी के भी साथ यात्रा कर रहे हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि अगर ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत पड़ जाती है, नौबत आती है, तो सबसे पहले आप अपने ऑक्सीजन मास्क पहनिए, बाद में बच्चे को पहनाइए, क्योंकि पहली मदद आपको खुद की करनी है, उसके बाद आपको बच्चे की मदद कर सकते हो आप. So it's important that in our compensation plan that you lead by example. You get to the first rank right away. That's as fast as possible, and you help your people getting started. That should be their first goal: get to the first rank. So when you're cycling and you're moving up in ranks, you're going to be motivating others on your team, and that's when you're able to help your team even better. So it's important that you focus on your business first. So you sponsor one on the left, one on the right, continue to build on the outside of both legs, and focus on you getting to that first rank and the second rank and third rank. And you watch, you will motivate your team by your actions. So सबसे बढ़िया तरीका टीम को मोटिवेट करने का है कि आप पहले खुद वो चीज अचीव करें. जैसे आपको रैंक 1 अचीव करना है तो आप सबसे पहले खुद के लिए वो टारगेट सेट करें कि आपको रैंक 1 अचीव करना है. एक बंदे को लेफ्ट स्पॉन्सर किया, एक को राइट स्पॉन्सर किया, और आप टीम बिल्डिंग करते चले गए टिल द टाइम जब तक आपने खुद अपनी रैंक 1 अचीव नहीं की. जब आप रैंक 1 अचीव करते हैं तब आप लोगों को और आप हेल्प कर सकते हैं उनके रैंक 1 अचीव करने में. तो आप अपना रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आप इसको टारगेट करते रहें, नीचे के लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे. So Adit, Loris, anything else you want me to cover in this area? I think it was good. So basically, everyone has to focus on his business first, and place people where he needs to grow his business, so he can help people to grow, under him, and focus, helping them to reach the first levels. So this, I think, is very important for people to understand, and never promise, to build one leg, because it doesn't make sense business-wise. Okay, of course we have a lot of questions, but we are starting to run out of time. So there was one question, I think, which I received from several people, like regarding that, India is huge business, and India is different than other countries, and they are asking, okay, so why NHT Global is not, like, let's say, Indianizing itself, and offering smaller package, all those things.
So can you just give answer on that topic? Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनएसटी ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत डिफरेंट है बाकी सारे मार्केट से, एनएसटी ग्लोबल क्यों नहीं कुछ छोटे पैकेजेस लेके आता है, इंडियन हिसाब से क्यों नहीं वो प्रोडक्ट्स लाता है, और इंडियनाइज क्यों नहीं हो जाती है एनएसटी ग्लोबल और ज्यादा। Yes. So one thing that we have to all understand is that we've been programmed with certain beliefs, and we have these stringent beliefs about our own country. सो हमें एक चीज समझनी होगी कि हम सभी कुछ खास तरीके के विश्वास और मान्यताओं के साथ पले बड़े हैं जो हमें हमारे कंट्री से मिली है, हमारे क्षेत्र से हमें मिली है। Okay. So one of the things I get all the time, Loris and Edita, is, Joe, you don't understand. The people here in my market are different. The culture is different, et cetera, et cetera. सो एक चीज जो मुझे बहुत बार मिलती है और हमेशा मिलती है, लोग बोलते हैं कि जो आपको नहीं पता है कि लोग हमारे यहाँ थोड़े अलग हैं, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, हमारे यहाँ की मान्यताएं अलग हैं, और हमारे यहाँ जो बिजनेस है वो थोड़ा हटके है। ये मुझे बहुत बार ये हमेशा मिलता है। So these limited beliefs that we have about our country stops us from prosperity. और ये जो हमारे माइंड में हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, हमारे छोटा करने वाले अपने कंट्री को लेके बिलीफ्स हैं, यही हमारी ग्रोथ को जो है वो रोकता है। And that's why a guy like myself has built a massive business around the world, where I've gone into these markets, and no matter if I didn't understand the culture, et cetera, I would always outperform the people that were even local. It's because of these limited beliefs. सो मैं जिस भी कंट्री में गया वहां पे मैंने बड़ा बिजनेस किया, मैंने खड़ा किया, और ये सारे ग्लोबल मार्केट्स में मैंने बड़ा काम किया। उसका कारण एक ही था, वो मैंने कई बार लोकल से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा किया उस मार्केट में जाके। उसका कारण एक ही था, क्योंकि जो वहां के लोग थे उनकी लिमिटिंग बिलीफ थी। So in one of the most areas of limited beliefs that we have, it doesn't matter what society, is money. तो एक जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो हम चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, वो है पैसे को लेके। So doesn't matter where we are around the world, people have these limited beliefs that stops them from prosperity. And one thing we all must understand, if we build our business based on lack, based on poverty mentality, that we're building a business on sand. There's no foundation there. Everything has to be built on prosperity and abundance. सो एक जो बहुत लोगों की यूनिवर्सल मानसिकता है पैसे को लेके, वो है कमी को लेके, कि पैसे की कमी होती है। सो अगर आपका बिजनेस जो है वो छोटे पैसे को लेके है, या छोटे इन्वेस्टमेंट को लेके है, या कमी को लेके है, या आप इस तरीके की चीजों को लेके है, अगर आपका बिजनेस का फाउंडेशन प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धता के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो आपका मकान जो है, बिजनेस का जो मकान है, वो बेसिकली रेत पे खड़ा हुआ है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है सॉलिड नीचे। So, not to offend anybody on this webinar, it's real important. Over the last year, 2 years, as we knew that we were going to eventually launch into India, I've interviewed hundreds and hundreds of top leaders in India. मैं किसी को भी यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से जब हम इंडिया को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, सो हमने सैकड़ों लीडर्स से बात की जो बड़े लीडरशिप की पोजीशंस पे थे। And majority of the calls of the interviews all went into one direction. और जितने भी लोगों से कॉल पे बात हुई, उनमें सब में से एक चीज जो थी वो एक ही डायरेक्शन में जाती थी। So these leaders would all tell me how many people they have in their group. ये सभी लीडर मुझे एक ही चीज बताते थे कि उनके टीम कितनी बड़ी है। 50,000, 75,000, 100,000 people on their team. कोई बोलता था 50,000 की टीम है मेरे पास, कोई बोलता था 75,000 की टीम है, कोई बोलता था मेरे पास 1,00,000 लोगों की टीम है। But my question always to them back was, what is your sales volume every month? और मेरा उनसे हमेशा एक ही क्वेश्चन होता था, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स कितनी हो रही है? And 99.9% of them, their sales volume were all very poor. और 99.99% जो लोग थे उनका सेल्स वॉल्यूम बहुत ही खराब था।
So if you have a team in NHT that's 100,000, you should be doing, maybe 10 million a month in sales, easy. अगर आपके पास 1 लाख लोगों की टीम एनएसटी ग्लोबल में है तो करीब 60 करोड़ रुपए का बिजनेस आपका हर महीने का होना चाहिए कम से कम In US dollars. यूएस डॉलर्स की मैं बात है So I started seeing a pattern where all these talented people had massive groups, but they weren't making the money they should be making So मैं because of the philosophy. और मैंने एक पैटर्न देखा कि इन सभी लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे लेकिन वो लोग ये पैसा वो नहीं बना रहे थे जो उनको पैसा कमाना चाहिए था बिकॉज उनकी फिलोसफी गलत थी कहीं ना कहीं So what they did is they created entry points of people coming in for free. They had very low, they lowered the bar. And what ended up happening is you needed tens of thousands of people just to make any money. And it destroyed duplication because no one was end up making any money because you needed so many people to do so. So आखिरकार हुआ क्या अंततः कि उन्होंने फ्री एंट्री लगाना शुरू किया बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो बहुत थोड़े से पैसे से आप एंट्री कर सकते हो सो एक्चुअल में हुआ क्या उनको पैसा कमाने के लिए दसियों हजार लोगों को रिक्रूट करना पड़ रहा था तो ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा रहे थे क्यों क्योंकि उनको दसियों हजार लोगों को रिक्रूट करना पड़ रहा था कुछ कमाने के लिए So it goes back, if you build the business based on the poverty mentality and based on to make it affordable for everyone, then you will not grow in the business. And this is one of the major reasons why many companies, network marketing companies in the largest democratic middle class population in the world are no longer doing business in India. They've basically been kicked out of India because they weren't making any money. So यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में उन्होंने कोशिश की बिजनेस करने को जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है जहाँ पे सबसे बड़ा मिडिल क्लास है वहां पे वो बिजनेस नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने ये गरीबी की मानसिकता पे अपना बिजनेस खड़ा किया अगर आप ये बिजनेस को इस तरीके से कोशिश करते हो कि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकें गरीब लोग भी प्लान में एंट्री कर सकें तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे और यही कारण है बहुत सारी कंपनियां पैसा नहीं बना सकी और उनको इंडिया से वापस जाना पड़ा But it's also very important, ladies and gentlemen, understand that for NHT to be successful all over the world is we all have worked together. It's a family. And, the company drives the business through our promotions. And as we build in India, we'll continue to have special promotions just for the Indian market to grow and develop. And, grow and develop in the prosperous and abundance mindset. So this is what we will continue to do and grow as a family so we can, have abundance and prosperity in the market. So, आपको ये मैं बताना चाहूंगा एनएसटी ग्लोबल एक परिवार की तरह है और इंडिया के लिए हमारे हमेशा जो है स्पेशल प्रमोशंस चलते रहेंगे और इस तरीके के प्रमोशन होंगे जो आपके अबंडेंस को और प्रोस्पेरिटी की मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए चलते रहेंगे जिससे जितने भी लीडर्स हैं वो इसमें बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकें और हर कोई प्रॉस्पेरस हो सके Okay, I think we have time for one more question, Loris. Okay, yes. So we have to finish, of course, but we have actually covered a lot of questions directly or indirectly. And actually also covered my last question. I wanted to ask about, the mindset of abandoned mindset, because this is, which we always have to explain to distributors, because there are a lot of questions like, okay, so how we, can get people from other companies and so on. So that's why, maybe you can also enlighten a bit about that, the mindset of abundance. So why it's important when you, work in this field. So, बहुत सारे लोग हैं जिनके ये क्वेश्चंस होते हैं कि अबंडेंस मेंटालिटी को लेके बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम दूसरे कंपनी के लोगों को कैसे कांटेक्ट करें दूसरे कंपनी के लोगों को बिजनेस में कैसे लेके आए तो इस पॉइंट को आप कुछ कवर करना चाहेंगे So Aditya, how many middle class people in India right now?
would you say? they're close to 1 million, 10, so 10 million, some close to 200 million people. So about 200 million middle class people. Yeah. Okay. So here's my philosophy when it comes to building again with regards to the laws of the universe. There is a major law in the universe called cause and effect. Most people in the world understand it as the law of karma. So मैं आपको कुछ एक चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे जो गार्सिया सर ने मुझसे पूछा कि इंडिया में मिडिल क्लास कितना बड़ा है, मैंने बताया करीब 20 करोड़ की आबादी है इंडिया में मिडिल क्लास की। सो जो गार्सिया सर ने बताया कि यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं। एक लॉज है कॉज एंड इफेक्ट का, जिसको हम लोग इंडिया में कर्मा भी बोलते हैं, कर्मा की थ्योरी। So there are millions and millions and millions of people in India that have never heard of network marketing. You know, 99.9% of the population haven't heard about NHT Global. इंडिया में करोड़ों लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ पता नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अभी तक एनएसटी और 99.9999% पॉपुलेशन ने कभी एनएसटी ग्लोबल का नाम तक नहीं सुना। So it's always been my philosophy not to target other network marketers or try to take other network marketers and other companies off track. And I'll tell you why, because it comes down to law of karma. If I go in yes, NHT has one of the best stories, one of the best compensation plans ever. We have got some incredible, you know, the auto bank bonus, auto bank. We have some really competitive, unfair competitive aspects to NHT compared to other companies. But my whole philosophy in life is to build people up, to grow their conscious level, not to take them off track. So I've never been the person that is targeted and other company leaders to come here and take them off track. Yes, if they're not happy and they come to me and we discuss it, of course, that's one thing. But I don't purposely try to take down other people's buildings, because eventually what happens, Adita and Loris, it'll be done unto you. The law of karma. So लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि अगर आप किसी और कंपनी को टारगेट करोगे, किसी और लोगों को आप टारगेट करोगे और आप उनके लोगों को छीन के आप अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करोगे, तो कर्मा का लॉ ये कहता है कि आपके साथ भी वो सूनर और लेटर होगा। सो मैं हमेशा जीरो से नए सिरे से लोगों को बिल्ड करने में बिलीव करता हूँ, जिनको हम जीरो से हेल्प कर सकें। ऑफ कोर्स अगर कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड है और वो आपके पास आता है तो जरूर हम उनको फिर बात करते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में हमारे पास सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान है, सबसे बेस्ट सिस्टम है, ऑटोशिप बैंकिंग है, बट फिर भी मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर हम ये एक चीज करेंगे तो सूनर और लेटर हमारे पर भी ये चीज आने ही वाली है। So I was in a discussion with a top leader in another company in India. He loved what he saw with NHT, and I asked him. I realized he was a top leader in another company. In my discussion and there, and I just told him, "Look, I respect what you're doing. Anything I can do to help in your business, please reach out to me." He asked me some questions, philosophy questions and building. And he after the call, he says, "Joe, I've never come across a leader like you that never pushed your business on me, that you were willing to help me in my own business." So the relationship that we've built. So, and he told me, if I ever become unhappy or a company goes in a different direction or whatever happens, you're the first guy I'm going to call. So this is how, this has been my philosophy for many years. And we have so many people in India. There's enough room, Adita, for abundance for everyone. And let's support the industry. Let's go after a lot of people that are haven't heard of NHT, that haven't heard of network marketing. You know, and obviously the ones that are in the industry that are not happy, they're unhappy for whatever reason, you know, obviously they can come here and buy into our philosophy. But again, this has been my philosophy for a long time. So
जैसा कि मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, इंडिया से एक लीडर था जो किसी और कंपनी में काम कर रहा था। उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैं और उसने बोला कि वो हैप्पी नहीं है, या अपना उसने एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने मुझे फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए। मैंने उसको हेल्प किया, और उसने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे लीडर से बात नहीं की जो मुझे मेरे ही बिजनेस में मुझे हेल्प कर रहा है। मैंने उनको यही पेशकश की कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप बताएं मैं किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। और उसने एक चीज का प्रॉमिस किया कि जब कभी भी मेरे बिजनेस में कोई चीज खराब जाएगा या कोई भी चीज होगा, या मेरी कंपनी कहीं और डायरेक्शन में जाएगी, तो आप पहले पर्सन होंगे जिससे मैं कांटेक्ट करूंगा। सो हमारा फिलोसफी बहुत सिंपल है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनको बिजनेस दिखा सकते हैं। Okay. And maybe in the future, with some more questions, we can do another call, another webinar. Yeah, of course. Let's Yes. do another webinar in the future because there are a lot of questions and still coming in. But I think we managed to give some wider picture of the business with NHT Global in India. And I think with this note, we can basically finish, maybe, final some kind of message to people as we, because it's soon we have an event in Mumbai and Delhi, the pre-launch event, company event. Those will be the first ones. So maybe short message to people, encouragement, and why they should focus on getting as many people as possible to these events. सो मीटिंग खत्म करने से पहले कोई शॉर्ट इंकरेजमेंट मैसेज। अभी 6 अप्रैल और 13 अप्रैल को इंडिया में मीटिंग्स होने जा रहे हैं, सेमिनार्स होने वाले हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्ट मैसेज है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग किसी और कॉल को प्लान कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस बच गए हैं फिर हम उनको भी एड्रेस कर सकते हैं वन बाय वन। The biggest thing, as I shared before, ladies and gentlemen, understand where you are right now in history. You are in the beginning of a monster legacy company in India. सो फ्रेंड्स, मैं वापस से वही पॉइंट रिपीट करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हो इंडिया में। Timing is everything in business. टाइमिंग बिजनेस में सब कुछ रखता है। So I would recommend review this webinar, buy into my philosophies, go in the next year, make a goal, an activity goal, and how many people you're going to connect to every single day and stay consistent. सो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप एक साल का प्लानिंग करें, एक्टिविटी पे आप जाएं, और जो फिलोसफी के लेसन जो मैंने आपको बताया जो आपको ट्रेनिंग साइट से मिलेंगे उसके ऊपर आप प्लग इन करें कंसिस्टेंट बेसिस पे, और एक साल का टारगेट प्लान बनाएं। And be different from everyone else. Make a commitment that you'll never quit. You'll never think of quitting. सो और लोगों से हट के एक चीज का डिसीजन करें, कि आप चाहे आप कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए आप क्विट नहीं करोगे। And this power will separate you from everyone else. और ये जो पावरफुल कमिटमेंट होगा ये आपको सभी लोगों से हट के रखेगा। And then the biggest skill set that I learned to do over the years is putting people in the seats. Our CFO is going to be at these events in Mumbai and Delhi. This is a good opportunity for you to build the belief of your distributors, of your prospects, to really understand what they have in their hands here with NH2 Global. I would recommend the next month is continue to expose the business in massive action leading up to these events, and your lives will change if you continue with these actions. एक चीज मैंने पिछले कई सालों में देखी है कि सबसे बेस्ट काम जो आप कर सकते हो वो आप अपने गेस्ट को, हमारे जो चीफ सीएफओ है उनके सामने आप बिठा सकते हो जो इन मीटिंग्स में रहेंगे। सो इट कैन ये आपका बिजनेस चेंज कर सकता है। आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपको उनके सामने बिठाना है ये दोनों इवेंट्स में, और आपका बिजनेस ऐसे चेंज होगा। Well, ladies and gentlemen, thanks for your time. Aditya, you are awesome. Loris, you're awesome. We are very lucky in India to have great leaders like yourself leading the charge. God bless to all of you, and let's make magic happen in India. I'm committed to you for this to happen. Okay, thank you, Joe. Thank you so much, Thank you, sir. Joe. Thank you so much.
Yeah, thank you for your valuable time, and it was really a pleasure talking to you. And yeah, so everyone, this webinar will be recorded, is recorded already, so you can watch it later again and share also with other people. So thank you everyone. Thank you, Aditya, for translating. And yeah, see you guys on next Monday, next webinar. Thank you guys. Bye.